Hello and welcome all of you. You're watching K Commerce Academy with me Kunal Singhal. From the chapter of Death of a Partner, this is our third lecture video in which we will be studying the revaluation of assets and liabilities. I hope आप लोगों को अब अच्छी तरह से ध्यान हो चुका होगा. Whenever we get a caution of death of a partner, these are the fixed 7 adjustments that we need to make, of which the first, that is calculation of new profit sharing ratio including gaining ratio and accounting treatment of goodwill, we had already studied in our previous video. If you have not watched that, you can watch it from my YouTube channel. The link is given in the description. Today we'll be studying the revaluation of assets and liabilities. Before starting that, let me make this thing clear. Whether you get a caution of change in profit sharing ratio or admission of a partner or retirement of a partner or even the death of a partner, the procedure of revaluation of assets and liabilities is exactly the same and similar in all the situations. So we'll just be solving one question to have a recap of the previously taught. Before starting that, one question for you all. In absence of partnership deed, I just want to check whether you are studying the previous or not. In absence of partnership deed, at what rate interest on capital will be allowed to a partner? So you have to comment the answer in the comment section. In absence of partnership deed, at what rate interest on capital will be allowed to a partner? Fine. Let us continue with today's topic. This is the question we are having, that is X, Y and Z are partners sharing profits in the ratio of 5:3:2. Z died on 30th June and on this date following adjustments were agreed upon. The value of furniture is to be increased by rupees 12,000. The value of stock is to be decreased by rupees 10,000. Machinery of the book value of rupees 50,000 is to be reduced by 10%. Journalize the above transactions. So before starting the solution, we must give a due consideration to one point, that here the date of death is given to us. Z died on 30th June. So is there any calculation required to be made, or will be there any effect over the calculation of revaluation of this date? Absolutely not. The revaluation of assets and liabilities will be done exactly on the similar basis as we have studied in our previous chapters. So we just need to pass 3 journal entries for all these 3 points, and after that last entry, whatever profit or loss on revaluation will arise to the partners will be distributed in their old profit sharing ratio. So let us take the first point. The value of furniture is to be increased by rupees 12,000. फर्नीचर को इंक्रीज करना है, यानी कि एसेट को इंक्रीज करना है. Whenever there will be an increase in asset is to be debited. So here is our first journal entry, that is furniture account debited to revaluation account rupees 12,000. फर्नीचर को इंक्रीज करना है, एसेट को इंक्रीज करना है, तो उस एसेट को आप डेबिट कर देंगे और क्रेडिट कैसे करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट को. सिंपल लॉजिक है. सो फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट रुपीज 12,000. लेट अस मूव विद द सेकंड पॉइंट. एंड आई होप आप लोगों ने या तो इस क्वेश्चन को कॉपी में नोट डाउन कर लिया होगा या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, बिकॉज जब मैं सॉल्यूशन करवाऊँ तो क्वेश्चन आपके सामने होना चाहिए, तभी आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे. द सेकंड पॉइंट इज द वैल्यू ऑफ स्टॉक इज टू बी डिक्रीज्ड बाय रुपीज 10,000. वैल्यू ऑफ स्टॉक इज टू बी डिक्रीज्ड. स्टॉक को डिक्रीज करना है, इट मीन्स एसेट को डिक्रीज करना है. एसेट जब कभी भी डिक्रीज करना होता है तो हम एसेट को क्रेडिट कर देते हैं. ओके, सो हेयर इज आवर सेकंड जनरल एंट्री. रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू स्टॉक अकाउंट रुपीज 10,000. स्टॉक को डिक्रीज करना था, एसेट को डिक्रीज करना था, तो एसेट को हमने क्रेडिट कर दिया और डेबिट किसको करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट. सिंपल लॉजिक इज देयर. लेट अस मूव विद द थर्ड ट्रांजेक्शन, दैट इज मशीनरी ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ रुपीज 50,000. मशीनरी की बुक वैल्यू 50,000 है, इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%. हाउ मच इज द 10% ऑफ 50,000? इट इज़ रुपीज़ 5,000. तो कितने से रिड्यूस करना है? 5,000 से. मशीनरी को रिड्यूस करना है, यानी कि एसेट को रिड्यूस करना है. एंड वेन एवर देर विल बी अ रिडक्शन इन एसेट, एसेट इज टू बी credited. Reduction in asset, decrease in asset is to be credited. So here is our third journal entry, that is revaluation account debited to machinery account. मशीनरी को रिड्यूस करना था.
मशीनरी की वैल्यू में रिड्यूस करना था, एसेट को रिड्यूस करना, और जब भी एसेट को रिड्यूस करना होता है तो हम एसेट को क्रेडिट करते हैं, और डेबिट कौन होगा? सिंपली द रिवैल्यूएशन अकाउंट। ऑन द अपोजिट साइड द रिवैल्यूएशन अकाउंट विल कम। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट ₹5,000। और हमेशा याद रखिए रिवैल्यूएशन के एंट्रीज़ में कितना अमाउंट आता है, जितना अमाउंट चेंज होता है वो आता है। अब देखिए यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट दे रखा है, पॉइंट नंबर सी, मशीनरी ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ ₹50,000 इज़ टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%। कई बार बच्चों के माइंड में कन्फ्यूजन होता है कि इस एंट्री में हम 50,000 लिखें या 5,000 लिखें, 10% 5,000 लिखें, या वो लेस करने के बाद जो 45,000 बच रहा है वो लिखें। सो मेक दिस थिंग क्लियर टू योर माइंड। चेंज कितना हो रहा है, रिडक्शन कितना हुआ है, जितना रिडक्शन हुआ है या जितना इंक्रीज़ हुआ है वो अमाउंट रिवैल्यूएशन में आता है। तो यहाँ पे रिडक्शन कितना हुआ है, यहाँ रिडक्शन हुआ है 5,000 का, सो 5,000 आएगा रिवैल्यूएशन में। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट। All the three entries have been done. Now we have to calculate whether there is a profit on revaluation or loss on revaluation. So simply for that, we will just check. In the first journal entry, we have credited the revaluation account by ₹12,000. You can just rewind the video and check it. In the first journal entry, we have credited the revaluation account, while in the second and third journal entry, we have debited the revaluation account. Total, we have credited the revaluation account by ₹12,000, while in the debit we have debited the revaluation account in the second entry for 10,000. In the third entry we have debited it for ₹5,000. So the total of revaluation account have been debited totally for ₹15,000, while it has been credited only for ₹12,000. Finally रिवैल्यूएशन अकाउंट विल बी फर्दर टू बी क्रेडिटेड बाय ₹3,000। हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट को फर्स्ट एंट्री में 12,000 से क्रेडिट किया है, और उसके बाद की दो जनरल एंट्रीज़ में हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट को जो डेबिट किया है वो टोटल हो रहा है 15,000। एज पर द रूल ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम देयर शुड बी इक्वल अमाउंट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट को 3,000 से और क्रेडिट करना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट को तो क्रेडिट कर देंगे, तो फिर डेबिट किसको करेंगे? डेबिट करेंगे हम किसे? all the partners go in their old profit sharing ratio. So here is our fourth journal entry, that is X's capital account debited, Y's capital account debited, Z's capital account debited. All the partners will be debited, whether it is a change in profit sharing ratio, retirement, death or admission. रिवैल्यूएशन का जब भी होगा तो ऑल द पार्टनर्स, जितने पार्टनर्स के नेम गिवन है ओल्ड पार्टनर्स के, उनके नेम आ जाएंगे। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया 3,000 से। Being loss on revaluation transferred in old profit sharing ratio. Old profit sharing ratio given in the question is 5:3:2. You can check the question details in the question. It is 5:3:2. Whatever profit on revaluation or the loss on revaluation arises, it will be distributed among the old partners in their old profit sharing ratio. So these four journal entries will be required to be passed in this question. I hope आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और इसके बेसिस के अदर क्वेश्चंस आप अपनी बुक में से प्रैक्टिस करें। कोई भी डाउट आता है, क्वेरी आता है, सो यू कैन जस्ट मेंशन इट इन द कमेंट, और यू कैन जस्ट मेल इट on my ID, that is Kunal Singhal 85. Do not forget to like, share and subscribe this channel, and keep watching for class 12th accountancy business series and economics K Commerce Academy. Thank you.